Hello everyone. In this segment, we'll see vector multiplication, a part of vector algebra. अब पिछली वीडियो में हमने देखा था वेक्टर का और स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, even multiplication of scalar quantities. So as far as vector multiplication is considered, so we are having two product terms. One is called as scalar product and the other method is called as vector product. Let's suppose we have the first vector as a bar and the second one is b bar. So this multiplication could result in two ways: either a scalar product, which is also called as dot product, or vector product, which is called as cross product. So there are two possibilities of it. So when we come across this first one as a scalar product, which is also called as dot product, so this representation will hold as a bar dot b bar, like this one, a bar into b bar. And in case of cross product, we have a bar cross b bar. So this is how we can represent scalar or vector product. So out of which first we'll discuss about dot product or scalar product. So I'll be writing scalar oblique dot product of vectors. Now how can you define it? So a scalar or dot product of two vectors a and b can be denoted as a bar into b bar is equal to product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors with cosine of smaller angle between them. What is the definition? The dot product of two vectors is equal to product of their magnitudes with cosine angle between them. Let's suppose we have two vectors, let this is a और ये है p. तो इन दोनों में जो सबसे स्मॉलर एंगल होगा वो हम कोसाइन एंगल लेते हैं. सो ए बार इंटू पी बार इंटू कॉस थीटा. सो इस वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. ओके, दिस एंगल इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड पी. Okay, now important point is what, by using scalar or dot product we can find the theta or angle between these two particular vectors also. So it could be its application. So based on the application also we can write cos theta will be equal to a bar dot b bar with multiplication, and behalf of that we can also find theta as cos inverse of a bar b bar upon mod a bar into mod b bar. तो ये वाला हो सकता है उसका एप्लीकेशन. नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच इज़ फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम उसको कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. नाउ व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज? सो फर्स्ट व्हेन वी कंसीडर these two vectors are parallel with each other, first property I'm writing, if a bar and b bar are parallel. Now see, if a bar and b bar, if both are parallel, their angle will be 0 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट, if I put theta 0 in this particular equation, the dot product will be a bar into b bar is equal to mod a bar into mod b bar with cos 0, and we know that cos 0 always equal to 1 होता है. तो the first property आ गया, a bar dot b bar will be product of its magnitude. So this will be our first property when they are parallel with each other. Similarly, second part, if you see, if they are perpendicular, so we'll write a bar b bar
आर परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आर ए बार ऑन एक्स एक्सिस और बी बार को हम कंसिडर करते हैं ऑन वाई एक्सिस। सो ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का आएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। सो थीटा विल बी 90 डिग्री। So based on that, we'll go for its product a bar dot b bar as mod a bar into mod b bar with cos 90. Now cos 90 तो 0 होता है, so 0 into this will be 0. So most important property a bar into b bar when they are perpendicular, dot product कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. So किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. और किसी भी वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो पैरेलल है तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. ओके, सिमिलरली we will be coming across the next property as third one. They are commutative, that is dot product is commutative in nature. Okay, so if I multiply a bar with b bar, it will be same as b bar into a bar. Fourth, it obeys distributive property. So if I write a bar dot with b bar plus c bar, तो इसका जो रिजल्ट है वो देखिए क्या आएगा, a bar into b bar. फर्स्ट a bar dot b bar plus a bar dot c bar. So it is following the distributive law. सो ये तो हो गया एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. सिमिलरली इफ यू राइट, इफ आई मल्टीप्लाई द सेम वेक्टर्स विथ ईच अदर, लेट अस अज्यूम वी हैव फर्स्ट वेक्टर ए बार और दूसरा वेक्टर भी है ए बार. अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट. सो ए बार इंटू ए बार विल बी इक्वल टू मॉड ए बार इंटू मॉड ए बार इंटू कॉस थीटा. अब देखिए अगर सेम वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेते हैं, देखिए ए बार है, अगर वंस अगेन अभी ए बार कंसिडर करेंगे तो जो एंगल है वो कितना हो सकता है, 0, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एज गुड एज अ पैरेलल वन. सो अगर cos 0 यहाँ पर लिखते हैं तो ये cos 0 1 होता है, तो आ जाएगा ए बार डॉट ए बार. अगर मैग्नीट्यूड का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड का तो स्क्वायर आ जाएगा. सो वी कैन राइट ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर. ओके, सो अगर सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आ जाएगा स्क्वायर. ये तो हो गया एक प्रॉपर्टी. अब चलते मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट जो हम एवरी एग्जाम्पल में यूज करेंगे. एंड दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट व्हेन वी मल्टीप्लाई और व्हेन वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो क्या आना चाहिए. तो देखिए वी विल बी कंसिडरिंग, लेट्स सपोज वी हैव 3 वेक्टर्स एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ ईच अदर. ये वाला हम एक्स एक्सिस के क्रॉस लेते हैं, एक्स बार, लेट्स दिस इज ए वाई, दिस इज 3 डायमेंशनल और ये है जेड, देखिए ए जेड बार. जनरली हम 2 डायमेंशन होता तो हॉरिजॉन्टली एक्स ले चुके थे और वर्टिकली वाई, लेकिन ये 3 वाला है तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई और जेड. अब देखिए दिस 3 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि हर एक का जो एंगल है वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. ओके, तो अभी हमने देखा था व्हेन द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ ईच अदर या फिर परपेंडिकुलर है तो जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 0 आता है. डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. आई कैन शो दिस वन, दिस इज इट. इफ देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दैट देखिए इस वाले को हम लिखेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस ax डॉट ay is equal to 0 perpendicular. Next ay with az, ay dot az, it will be 0. Similarly next az with ax, it will be 0. ये एक पॉसिबिलिटी हो गया. सेकंड ay with ax,
then az with ay. Similarly next ax with az, यानी जो भी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उन सब का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो इसको एक आसान से भाषा में अगर हम लिखेंगे तो अगर हम दो डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दैट आई एम राइटिंग दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ax डॉट ay इज इक्वल टू ay डॉट az इज इक्वल टू az डॉट ax इज इक्वल टू ax डॉट az इज इक्वल टू az डॉट ay इज इक्वल टू ay डॉट ax विल बी इक्वल टू 0. सो जो डिफरेंट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो डिफरेंट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. Important property. Next, when we multiply the same vector with each other, okay, same vector with each other, तो क्या आना चाहिए. So let's suppose I am multiplying ax bar with ax bar. अब देखिए अगर हम सेम इसको मल्टीप्लाई करें, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तो एंगल होता है 0 डिग्रीज का. अब अगर एंगल 0 डिग्रीज का आता है तो हमने देखा था cos थीटा तो 0 हो गया, यानी कि उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार. यस, सो एक्स बार का मॉड 1 और वो 1 आता है, तो ये वाला रिजल्ट जो है वो आएगा 1. सो इस वाले को हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनी यूनिट वेक्टर डॉटेड इटसेल्फ इज यूनिटी. ओके, अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 1 होता है. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग एक्स बार यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. सो इफ यू मल्टीप्लाई ए एक्स बार विथ ए एक्स बार, तो ये आ जाएगा मॉड ए एक्स बार डॉट मॉड ए एक्स बार इंटू कॉस थीटा. लेकिन हमें पता है एंगल 0 डिग्रीज होता है, तो ये आ जाएगा ए एक्स बार मॉड ए एक्स बार कॉस ऑफ 0. कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा मॉड ए एक्स बार डॉट मॉड ए एक्स बार. अब मॉड ए एक्स का तो वैल्यू 1 होता है, सो 1 इंटू 1 विल बी 1. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स कितना आता है, 1 आता है. सो इसके भी आप पे लास्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ए एक्स बार डॉट ए एक्स बार इज इक्वल टू ए वाई बार डॉट ए वाई बार इज इक्वल टू ए जेड बार डॉट ए जेड बार इज इक्वल टू 1. तो सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट 1, और अगर वो डिफरेंट है तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो दिस इज 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आर डॉट प्रोडक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, इससे के ऊपर ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के डिपेंडेंट है. सो हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो दिस इज अबाउट डॉट प्रोडक्ट and its property. Now let us see some examples on it, how to find dot product and how to find angle between them. So first we'll take dot product of these two as a bar dot b bar is equal to a bar देखिए दिया है 3ax plus 4ay plus az into 2ay minus 5az. Now we'll multiply the same terms which is equal to, देखिए first if I multiply ax with ay ax with az, तो इसका तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, और we'll do that term also. Let's multiply these terms first with this. 3 into 2 will be 6 ax dot ay minus 3 into 5 15 ax dot az plus we'll multiply y terms, this one 4 into 2 8 ay dot ay minus 4 into 5 20 ay az ay. अब हम az से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट प्लस 2 into 1 as 2 az डॉट ay, और फाइनली az को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 5 into 1 as 5
az dot az. Now we know the property of dot product जो हमने अभी देखा था. I will be showing you. The dot product of same vector will be 1 or dot product of different vectors directions में तो क्या आता है 0, यानी कि ax ay az वगैरह 0 होता है. तो देखिए यहाँ पर ax डॉट ay ये आ जाएगा 0, ax डॉट az 0 आ जाएगा, ay इंटू ay 1 होता है. सो वी विल राइटिंग 8 इंटू 1 एज 8. नेक्स्ट ay az 0, again az ay dot product 0 or az into az 1. So 5 into 1 will be 5. Finally we will try 8 minus 5 which is 3. So a bar dot b bar will be 3. Okay, most important. Next is what we have to take product of magnitude of a and b. So let's find magnitude of a. A bar is 3ax plus 4ay plus az and its magnitude will be under root 3 square plus 4 square plus magnitude यहाँ पर 1 है तो 1 square. It will be 9 plus 16 plus 1. So we'll be getting under root 26. A. Similarly b bar उसका magnitude b is equal to है 2ay minus 5az. So we'll be getting 2 square plus minus 5 square. 2 square is 4, 5 square will be 25. We'll be getting under root 29. Okay, now let's find, or we'll put those values in this equation. So we'll be getting cos theta is equal to, first a bar dot b bar is 3 divided by this product under root 26 into under root. Okay, so this value we have written. Finally we have to find theta, so we'll write theta as cos inverse of 3 by multiplication of these two, under root 26 under root 29. So if you do this thing, so you'll be getting 27.45. and if I take angle of this as 3 divided by this terms as 27.45, so we'll be getting cos inverse of 0.109. Now we have to take cos inverse of this, so we'll be writing shift cos inverse with the value 0.109. So our angle will be 83.74. So finally we got theta as 87.74 degrees. So this will be our angle between the given terms. Okay, in electromagnetic field theory it is quite important how you are handling the calculator, हम किस तरह से हैंडल करते हैं वो भी important है. So this is the smallest example on how will you find angle between the given vectors using dot products. I hope you understood this. Thank you.